dive into the future of electric vehicles. आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की, जो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. They are a pure EV player in India and are building technology and manufacturing capabilities for EVs and EV components including cells. अब तक ओला इलेक्ट्रिक ने 7 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं और 4 नए प्रोडक्ट्स अनाउंस किए हैं. Company focuses on capturing the opportunity of electrification of mobility in India and also seek opportunities to export its EV in international markets in future. इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इनके बिजनेस मॉडल का कोर है, जहां ये इन हाउस प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करते हैं. ओला इलेक्ट्रिक का अपना एक डायरेक्ट टू कस्टमर ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें इंडिया में 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 431 सर्विस सेंटर्स हैं. Company proposes to utilize the proceeds towards expenses incurred by its subsidiary, expansion of its capacity, investment into research and development and so on. अब अपने कैलेंडर्स ब्लॉक कर लो, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक IPO आ रहा है 2 अगस्त से 6 अगस्त तक. Total issue size of the IPO is 6,145 crores with a price band of rupees 72 to rupees 76 per share and the lot size of 195 shares. इस IPO में एम्प्लॉय कैटेगरी भी अवेलेबल है with a price discount of rupees 7 per share. The minimum application amount under retail category is 14,820 rupees. इस मौके को मिस मत करिए एंड इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए. Stay connected with Yes Securities, your partner in making wise investment decisions. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.